Nidhi Chaphekar Dr. Meera Ji and Smitha Singh Ji. I would request them to please come onto the stage. मैं चाहूँगा तालियों के साथ हम सब उनका स्वागत करें. Captain Manisha Mohan Puri's journey into aviation started way back in 1986 when she got a scholarship from 60 hours of free flying at the Bhopal Flying Club. She went to the USA to complete her flying and got her commercial license, pilot license with instrument training and rating from Skywings Flight Training School in Dallas, Texas. On returning to India, she joined Indian Airlines Limited. Currently, she is the secretary of the International Organization of Women Pilots, also known as the 99s. Her book, Sarees to Stripes, is a collection of phenomenal true stories of commercial women pilots of India. The book stems from experiences, both personal as well as those that numerous other women had, the challenges faced by them, and how they broke the glass ceiling every time. As a discussion, we are delighted to have Nidhi Shaabikarji. She is a TEDx speaker, motivational speaker, social activist, author and achievers of many national and international awards. She is also the author of the book titled Unbroken, a chronicle of the Brussels terror attack survivor. She has also received Bravery Award from APAI 2016, Shapikar and Brothers Film Award 2016, Shurveer Awards 2017, and Dr. Ambedkar Award in the year 2017. As the second discussion for this session, we are fortunate to have Dr. Meera Ji. She is the Secretary of the Society for Culture and Environment. She has held 2 exhibitions on Air India's cultural journey. The last one was attended by the Aviation Minister, Sindhya Ji. She is an art historian and an architect, former member of the National Monument Authority, and she has been a convener of INTEC. Having completed several projects on heritage conservation, she is also the one who initiated the heritage walks in Bhopal way back in 2003. And next, we are happy to have Smitha Singh Ji. She has been with the media for over last 17 long years, and she has worked in the field of print media, book publishing, and education. She has worked with eminent newspapers like the Times of India, National Mail, and was the feature editor of erstwhile daily published from Bhopal, DB Post. She has also worked with magazines like Discover India and Swagat, which was the former in-flight magazine of Air India, and India Perspectives, that was magazine for Ministry of External Affairs and more. I would request the ladies to please unfold this wonderful conversation, and we must appreciate them with a round of applause. गुड मॉर्निंग एवरीवन. मैं देखती हूँ कि बहुत सारे यंग लड़कियाँ, स्कूल की लड़कियाँ यहाँ बैठी हुई हैं, बहुत सारी. तो बहुत सारा इंस्पिरेशन है, एक पूरा करियर के बारे में बात हो रही है. एंड इफ़ वी कैन स्विच बिटवीन इंग्लिश एंड हिंदी, आई थिंक वील बी एबल टू रीच आउट टू देम, क्योंकि ये मोटिवेशनल स्टोरी है. आपकी जितनी स्टोरीज किताब में लिखी हुई सब मोटिवेशनल हैं. और आपने 19 पायलट्स, महिला पायलट्स के बारे में इसमें बात की है, उनके स्ट्रगल्स के बारे में बात की है, कहाँ कहाँ कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, और एज अ वुमेन पायलट, क्योंकि एक पूरा नया एरिया ऑफ करियर है, तो उसमें शुरू से क्या स्ट्रगल्स हुए, अब क्या एक्सेप्टेंसेस हैं. मैं इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगी, लेकिन मैं चाहूँगी कि मीनाक्षी दुआ जी यहाँ पर हैं. मीनाक्षी दुआ जो है एयर इंडिया में 20 साल 25 साल तक एविएशन ट्रेनिंग देती रही हैं, और शी वॉज अ वेरी सीनियर ऑफिसर इन एयर इंडिया. एंड आई विल relinquish my seat here, and I would like her to come and talk to you, because she knows aviation like nobody's business, or she understands pilots and aircrafts and all that. So wishing you a very nice conversation. और कोशिश करिएगा कि हिंदी में भी बोलें, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां दिखाई दे रही हैं मुझे छोटे स्कूल की. थैंक यू. Thank you.
and namaste to everyone. I'm very happy to be here and I had a lovely introduction. मैं ज़्यादा उसके बारे में और नहीं बोलूँगी. डॉक्टर मीरा दास जी ने पहला सवाल किया ये कि आपने 19 लड़कियों के बारे में जो इनने फ्लाइंग किया, पायलट बनी और किस तरह उन्हें परिस्थितियों को सामना करते हुए आगे बढ़ी, गिव अप नहीं किया. सबसे बड़ी जो बात ये है. तो मेरी ये जो किताब है 19 पायलटों पे इसलिए है क्योंकि मैं आपको 1935 से लेकर आज तक की दुनिया दिखा रही हूँ इस किताब के थ्रू कि 1935 में हमारे देश में पहली महिला जो लाहौर फ्लाइंग क्लब में उनने फ्लाइंग स्टार्ट की, कैप्टन सरला ठुकराल. वो 16 साल में शादी हो गई लेकिन फिर भी she was so keen in learning and always wanting to do something different. उनके हस्बैंड इंडिया के फर्स्ट पायलट, इस कंट्री के फर्स्ट पायलट थे और वो फ्लाइंग करना चाहती थी लेकिन उनके हस्बैंड ने उनको मना कर दिया. कहते हैं आप पहले साइकिल चलानी सीखिए, गाड़ी चलाना सीखिए, फिर आप बात करिए मुझसे. लेकिन उनके फादर इन लॉ ने देखा कि सरला जी इज़ वेरी keen in learning things. She's a very focused, determined person और बड़ी एजुकेशन पे ध्यान रखती थी. लेकिन 35 में आपको पता है women were in पर्दा, वो पर्दा सिस्टम में एजुकेशन भी उनको मिलनी बड़ी मुश्किल थी. लेकिन उनके फादर इन लॉ ने उनको इनकरेज किया और उनको लाहौर फ्लाइंग क्लब में फ्लाइंग के लिए ले गई जब उनकी 4 साल की बेटी थी उनके पास. सो इससे कहानियाँ स्टार्ट होती हैं. ये ट्रू स्टोरी हैं. मैं सरला जी को मिली थी दिल्ली में जब वो 93 इयर्स की थी और उस समय उनने मुझे अपनी लाइफ जो 35 एंड 45 एंड 47 की किस तरह उनने परिस्थितियों से अपनी फ्लाइंग नहीं छोड़ी और कैसे फ्लाइंग की, इसके बारे में ये सारी किताब में इंफॉर्मेशन है. और वो इंडिया की पहली पायलट थी और साड़ी में फ्लाइंग करती थी क्योंकि उस समय लेडीज़ जो हम विमेन हैं वो साड़ीज ही पहन सकती थी. ज़्यादा उनको इस तरह के आउटफिट्स पहनने का मीन्स कभी उनने सोचा नहीं और घर गृहस्थी जिस तरह की थी वो इसी तरह रहना पड़ता था, पर्दा सिस्टम. सो द स्टोरी स्टार्ट्स कि हाउ विमेन in spite of all those difficulties of not getting education, not being encouraged, getting married at very young age, लेकिन अपने अंदर के confidence और self motivation से they reached where they wanted to reach and went into a profession जो even आज अगर बात करें तो male dominated समझा जाता है. Even in 2022, people are turning around and saying कि are you really a pilot? आप कमांड करती हैं कि सिर्फ हेल्प करती हैं. सो हम 35 से चलते हैं इस जर्नी को जहां सरला जी बिकॉज ऑफ पार्टीशन कुड नॉट कंप्लीट. कैप्टन प्रेम माथुर टुक द टॉर्च फॉरवर्ड. वो सेकंड वुमेन थी इस कंट्री में जो फ्लाइंग की और उनने फर्स्ट कमर्शियल पायलट इस कंट्री में लिया इन 1950. सो इस तरह से ये स्टोरीज हैं और हर की अपनी अपनी अलग परिस्थितियां थी. और बच्चों आप लोग यहाँ बैठे हो, मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि लाइफ में जो बनना है अपने आप से सोचकर सबसे कंसल्ट करो, सबके डिस्कशंस लो और जितना आपको मोटिवेशन लोग देते हैं लो, लेकिन अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखो कि मैं कर सकती हूँ और मैं करूँगी. कोई ऐसी परेशानी नहीं है, कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं है जो आप नहीं कर सकते. इस किताब में ये भी बताना चाहती हूँ मैं कि हमने इस प्रोफेशन को जेंडर नहीं बनाया. वी डिडंट से बिकॉज ऑफ वुमेन गिव अस प्रायोरिटी, गिव अस मोर बेनिफिट्स, गिव अस एक्स्ट्रा समथिंग. We were denied to become commercial pilot because we were women. There are letters from Minister of Communication in 50s where it is written, because you are a woman, even though you are highly qualified, we cannot hire you as a pilot. So ये gender based profession नहीं है, ये profession है आप कर सकते हो या नहीं कर सकते. And ये सभी profession life में इसी तरह होते हैं that you can do it or you cannot. And this is what the motivation should be with you all, that I can do it.
एंड जो परिस्थितियां आए उसका सामना करिए, गो हेड ऑन. वी वेंट हेड ऑन. इट डिडंट मैटर हु encouraged us or who did not encourage us. We encouraged ourselves and we told ourselves we are made to fly and we can fly. It's a very stressful profession. It needs lot of focus and dedication. But if you are focused in life, you can do it. Thank you. नमस्कार. शुरुआत करें डिस्कशन का. कैन आई स्टार्ट विथ योर परमिशन? या सो मैं पहला सवाल ये है, दिस ईयर्स वुमेन्स डे थीम वाज ब्रेकिंग द बायसेस. In this context, I remember a comment by Martina Navratilova, the great tennis player. She had said, tennis ball doesn't know how old I am. The ball doesn't know if I'm a man or a woman. Similarly, you have written in your book that a machine does not know whether a man or a woman is handling it. Yet, being a woman pilot, you must have faced biases. Tell us about them. Because this book is all about breaking the glass ceiling. All of you all have shattered glass ceilings. Yes, Smita ji, what you said is absolutely right. This book is breaking the glass ceiling, and that is what we want to project. And also, it is a machine, and an aircraft doesn't know whether a man or a female is handling the machine. If you're giving the right input, अगर आप सही उसको चलाओ, तो वो चाहे मेल हो या फीमेल हो, मशीन वही रिस्पॉन्स देगी. और यही हम बताना चाह रहे थे इतने सालों से, since the 1950s, that if I can fly, why should my gender come? Why should I be told because I'm a woman I cannot become a commercial airline pilot? And finally, because of continued struggle and continued determination, Captain Durba Banerjee broke this glass ceiling in 1966 by becoming the first woman to join the commercial airlines, Indian Airlines in our country. Because Indian Airlines और Air India ही हुआ करती थी उस समय. Air India ने तो बहुत late एंट्री दी है 1994, लेकिन इंडियन एयरलाइंस ने फर्स्ट वुमेन को 1966 में अलाउ किया ऑन प्रोबेशन, दैट वेदर शी विल बी एबल टू हैंडल और नॉट हैंडल, दे विल बी सीइंग इट फॉर 2 years. लेकिन शी प्रूव्ड हर वर्थ. शी टोल्ड एवरीबडी एंड शी प्रूव्ड टू पीपल अराउंड इन द एविएशन सर्कल एंड आउटसाइड दैट women can fly. It is not a gender based, like you said. Even a ball doesn't know, like Martina Ravilota said, even a ball doesn't know whether it is male or a female. How you respond to your game is what matters. Same way, this profession is how you fly, how you can carry on the stress involved with this, how you can handle all the emergencies that are involved with it, how you can take the aircraft from A to B safely. Manisha, I just love the title of the book, Sarees to the Stripes. If you can see, it's so beautiful, Sarees to the Stripes. And the first question, मेरा सबसे पहला सवाल, ये टाइटल आपके दिमाग में आया कैसे? इस बुक के टाइटल के बारे में सब मुझे रिप्लाई करते हैं. In social media, I keep getting the response that we love the book title. In fact, even when Sindhya ji inaugurated the book, he launched the book, his response was he also told me, I love your title of the book, you know. So yes, while writing the book, midway through, when I hadn't thought of the title when I started collecting all information and writing, but midway through, I realized the first woman in the country, Sarla ji, had no choice but to wear a sari and fly, because that was a passion to fly, and she wore sari, actually wore with a घूंघट. And in Tiger Mouth बच्चों ऐसा एरोप्लेन है जिसकी कॉकपिट ऊपर से खुली रहती है, पुराना, आजकल तो म्यूजियम में भी मुश्किल दिखता है. वहाँ पे जब आप फ्लाइंग करते हो तो बहुत हवा हिट करती है, लेकिन because Indian women could not wear trousers and shirts in 35 and move out. So she was so passionate and determined. She told me
that even that sari didn't bother whether it was flying or not. I just kept it tight, holding myself and taking lessons in Tiger Mouth. So I thought how well, she was so focused and so determined, and there is nothing better than trying to tell society and people that keeping the Indian tradition, she kept that because she wanted to do what she wanted to do. And she did her flying lessons and got her license. So, sari से ही हम लोग हमारी आइडेंटिटी निकली, हम जो हिंदुस्तान की लड़कियां हैं, लेकिन उससे ये मतलब नहीं है हम आसमान नहीं छू सकते. So, we trying to tell the society that whoever you could be, you can still reach the sky. You can take any profession and reach the sky. And that's where the title of the book came in. मनीषा जी, आई वुड लाइक टू आस्क यू कि आपने जो रिफ्लेक्ट किया है सब स्टोरीज के अंदर, उसमें आपको एक कॉमन फैक्टर क्या लगा कि सबकी लाइफ में चैलेंजेस रहे, लेकिन सपोर्टिंग फैक्टर्स कौन से रहे जो उड़ान देते रहे लेडीज को विंग्स की तरह, हवा की तरह? मीनाक्षी जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है. एंड देयर आर 2-3 कॉमन फैक्टर्स इन द बुक. द फर्स्ट फैक्टर इज support of the family. You know, when we joined the airlines during the interview, the पहला सवाल पूछा जाता था कि आप शादी के बाद क्या करेंगी, छोड़ देंगी? नहीं तो शादी के बाद नहीं छोड़ेंगी तो when you'll have your family, आपके बच्चे होंगे तब आप छोड़ देंगी. तो एयरलाइंस क्यों आप पे इतना खर्चा करें, जहाज उड़ाने के लिए इतना खर्चा क्यों करें? But all of us, even till today, all of us are married, we all have children. But not one left the profession because of that. All of us took command in all the aircrafts, from the Boeing to Airbuses to Jumbo 747, only women in the world flying as commander in the world, and the Dreamliner, the latest 787 series. So we have flown across the board, entire globe we have flown, and we all are married with families. And here I must say, the family support, especially an understanding husband who realizes the stress and the requirement of this profession. You know, finally, बच्चों ये मशीन है, हम उड़ते हैं, घर बोल जाते हैं, अच्छा अभी 5 घंटे में वापस आ जाएंगे. कहीं पे वो ग्राउंड हो जाता है, मशीन में प्रॉब्लम, इंजन में प्रॉब्लम, बर्ड हेड, बहुत बहुत प्रॉब्लम हो जाते. लेकिन पीछे हमें ये पता है हमारे बच्चों को देखने के लिए कोई है. सो सपोर्ट ऑफ द फैमिली, your husband and your understanding children as they grow up, I think was one common factor for all of us. The second common factor, I would say, you've been from that airlines. All of us have thanked Indian Airlines, and we do it till today. They actually gave us the wings. Durba Banerjee been taken in with people understanding that yes, if she's so determined, let us give us a chance, and we never look back. Girls went on, and even today, world may we are maximum number of women pilot flying commercial airlines even in the world today. Airlines understood some of our problems at home, did accommodate us when we had children, did give us day flying instead of long night stops, did allow us to take some leaves paid and some unpaid. So I think that support was also very important, and that also helped us to continue our profession. We've all flown for 30 years. I've joined in 1988. So most of us have innings of more than 20 years. And that is because of all this support. Thank you. Now I would like to ask you about handling emergencies. To start with, I would like to tell our audience about our flight from Delhi. There was a minor hit there when we came, and the Jet Airlines. Yeah, we came on the same flight, and I don't know what happened. Our flight touched the runway, and then again it flew up. And I was like, "What's happening?" We all panicked, all the passengers. And I was like, "Where's Manisha? She's the most experienced pilot. Let's call her, ask her what's happening." But thankfully, the Jet Airline pilots, they handled it, and we landed. So
in regards to this, I would like to ask you, handling emergencies, pilots have a limited time to, take not only timely decisions, but also implement those decisions and act accordingly. What is that one emergency that you remember clearly, that you still think about and... Emergencies come and they don't tell and come. You see, emergency नाम ही ये है कि वो एकदम से आ गई. So yes, though I would, before I talk of the emergencies, audience sitting here, I know passengers do get concerned, worried, and some of them are actually really genuinely, their heartbeat starts, But I want to tell you, this is the safest means of transport even till today. Since the time 1903, first aircraft with Wright brothers went up to what it is more than 100 years, because the aircraft goes through such stringent checks before they are released to fly as commercial flights. Plus, each aircraft after each landing is inspected, checked before it goes for the second flight. Every crew member goes through checks every 6 months. There is a ground technical performance, aircraft checks, emergency revisions, what you can say, simulators. So crew is very well trained, and getting command means you have gone through more than 10 years of flying before you can sit in that seat, because once you become a commander, the responsibility of a safe flight, whether it is passenger issue, baggage issue, emergencies, all is on your head. Final is the buck stops with you. So having said that, I'll just assure you the Indigo incident that happened was one of out of normal. Yes, it did touch down, it went up, but the wheel touch and going up when it's safe to get airborne and make a second approach rather than land and try to use all braking and unable to stop at the end of the runway. The guy sitting at the cockpit in that time, even me with 30 years of experience sitting behind can do many talks, but the person sitting right there knows the situation, knows the conditions, and takes the corrective action. This is the profession where everything works within a minute. बच्चों, 1 मिनट में हमको सब करना पड़ता है. एयरक्राफ्ट में अगर 5 मिनट की बात करें तो वो हमारे लिए 5 घंटे की बात है. 5 मिनट में तो जहाज अगर रिस्पॉन्स नहीं करता तो वर्ल्ड ओवर उसका मैसेज आ जाता है ये जहाज गुम गया है. सो विद इन 1 to 3 minutes ऑल आर एक्शंस आर कंप्लीट. सो यस, यहाँ पे जो प्रोफेशन है वहाँ पे आपको बहुत अलर्ट रहना पड़ता है सब समय. स्लो एंड स्टडी विंस द रेस यहाँ नहीं चलता, यहाँ फास्ट एंड स्टडी विंस द रेस. आप जल्दी करेंगे लेकिन उसको सही करेंगे, ये बहुत जरूरी है. सो आवर ट्रेनिंग इज सच, हमको आज अगर एक इंजन चला जाता है तो वो हमको इमरजेंसी नहीं लगती, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग ऐसी है, हमको एक इंजन से उड़ाना सिखाते हैं. जहाज में 2 इंजन लगे होते हैं, लेकिन हमारी सारी ट्रेनिंग ऐसी है कि हमको वो ट्रेनिंग में ही बोलते हैं कि आपके पास एक इंजन नहीं है, अब आप एयरक्राफ्ट को लैंड करके दिखाओ. सो ये ट्रेनिंग ऐसी होती है जहां आपको हर इमरजेंसी हर 6 महीने में प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और उसमें अगर आप जरा सी भी गलती करेंगे तो आपको वो जहाज में फ्लाइंग नहीं करने देते जब तक आप उसको ठीक ना करो. आपके ऊपर दोबारा चेक लगता है, तिबारा चेक लगता है. इस तरह हमारी ट्रेनिंग बहुत स्ट्रिक्ट है. फिर भी कई इमरजेंसीज ऐसी आ जाती हैं जो बुक में नहीं लिखी होती हैं. कई चीज़ें ऐसी इमरजेंसीज आती हैं, आप सब कुछ पढ़ाया नहीं जा सकता. आपका एक्सपीरियंस और आपका हैंडलिंग आपको सिखाता है. मेरा ऐसा एक्सपीरियंस एक हुआ था ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ माई करियर व्हेन आई वाज स्टिल अ को-पायलट. मैंने वो बुक में भी लिखा है. मेरा बोइंग 737 में एक एक्सीडेंट हुआ था. नॉर्मली इंसिडेंट्स हम कहते हैं जिसमें हम थोड़ा सा कुछ हुआ, मीनाक्षी जी को पता होगा, इंसिडेंट्स आर little bit of, like Indigo का हुआ, wheel touch, he went around, did another approach and came back. That is an incident. But accident होता है जब जहाज कहीं ना कहीं से नुकसान जहाज पे हो जाता है और कुछ पैसेंजर्स जहाज से ना बच पाए या बचें तो उनको बहुत चोट लगे. वो एक्सीडेंट कहता है एयरक्राफ्ट एविएशन में.
एक्सीडेंट के टाइम कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर निकाला जाता था। पेपरों में आप पढ़ते हो ब्लैक बॉक्स, वो एक्चुअली ऑरेंज इन कलर होता है, लेकिन उसको ब्लैक बॉक्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो एक्सीडेंट के टाइम निकाला जाता था। सो उसमें जो खबर मिलती थी वो अच्छी खबर नहीं होती थी, इसलिए उसको ब्लैक बॉक्स कहा जाता था। आज की डेट में 100% मॉनिटरिंग होती है। मीनाक्षी जी यहाँ बैठी हैं, उनने बड़ी हमारी मॉनिटरिंग की है। एक A to B की सेफ फ्लाइट पे भी हमारी CVR खोल के बोला आप लोग बहुत गपशप गलत मार रहे थे। सो आज की डेट में ट्रैफिक इतना बढ़ गया है, आसमान में बहुत ट्रैफिक है बेटा, और 100% हर कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और हर फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर निकाला जाता है, जिसमें देखा जाता है कॉकपिट क्रू ने सारे डाटा सारी फ्लाइट को सही रूप से किया है या वहाँ कुछ इश्यू हुआ है। जिस तरह इंडिको की आप बात कर रहे हो वो रीट्रेनिंग पे ले जाएंगे, ठीक है, मैं बता सकती हूँ और मुझे पता है हुआ क्या है। सो मेरा जब बोइंग का एक्सीडेंट हुआ था, जब भी एक्सीडेंट होता है इट इज़ नेवर वन रीज़न, इट इज़ ऑलवेज कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स दैट रिजल्ट इन अ मेजर एक्सीडेंट फॉर एन एयरक्राफ्ट। एंड इस एक्सीडेंट में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी। एयरक्राफ्ट को एक इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी विद इन 1.5 मिनट ऑफ टेक ऑफ, एंड उस 1 मिनट के अंदर में हमको एक बैरन लैंड ढूंढना पड़ा जिसमें हमको एयरक्राफ्ट को नीचे उतारना पड़ा। और हमको पता था हम टेक ऑफ पे थे, हमारे जहाज में 8 टन फ्यूल है, तो हमको ये भी पता था जैसे ही हम टच डाउन करेंगे जहाज में आग लग सकती है। उस सब को सोचते हुए हम उस परिस्थिति में जितना बेस्ट एक्शन ले सकते थे हमने लिया। हमने मेड ए कॉल भी दी, लेकिन हमको ग्राउंड से हेल्प 2 घंटे बाद मिली, जिसके कारण हम 50 लोगों को उस जहाज से नहीं बचा पाए। एयरक्राफ्ट के सब डोर जैम हो गए थे, एक डोर खुला था सिर्फ, और कॉकपिट और कैबिन के बीच का डोर जैम हो गया था। कॉकपिट क्रू को इमरजेंसी विंडो से जंप करना पड़ा। और आपको मैं ये भी बताना चाहती हूँ, जब इस इंसिडेंट 1993 में हुआ था, उसके बाद वर्ल्ड में ये पहला एक एयरक्राफ्ट ऐसे एक्सीडेंट के बाद 52 पीपल बचा पाए और कॉकपिट क्रू फर्स्ट टाइम अलाइव निकल सके। जो इस इंसिडेंट का पूरा कोर्ट इंक्वायरी होती है उसमें बात करके उसकी किस रीजन से ये सब हुआ उस पे एक फैक्ट फाइंडिंग बॉडी बनती है, और नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो वो किया। सो मैं उस इमरजेंसी से निकली, लेकिन वो 1 मिनट 1.5 मिनट, आई वुड से 1 मिनट 30 सेकेंड्स इज वॉट टॉट मी। एंड यू नो, बीइंग अ गर्ल, उस समय में नई नई लड़की थी, लोगों ने रिटर्न ऑफ कर दिया था कि ये तो कभी कॉकपिट में नहीं आएंगी, डर गई होंगी, ये हो गया। लेकिन मैंने वो भी सबको गलत प्रूफ किया। मैं वापस गई, फ्लाइंग की और कमांड लिया, और उसके बाद 20-22 साल कमांड में फ्लाइंग की। सो it's, you know what you are doing, you know, sitting in that cockpit, what is the condition, what is the situation, you do the best possible. ऐसे एक्सीडेंट बहुत कम होते हैं, ट्रेनिंग बहुत सीवियर ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग के बारे में भी इस किताब में आप पढ़ेंगे कैसे कॉकपिट क्रू की ट्रेनिंग चलती है और कैसे पायलट बना जाता है। मनीषा जी, अभी आपने इसका शीर्षक बताया कि साड़ीज टू स्ट्राइप्स, एंड स्ट्राइप्स, बच्चों आप में से कईयों को मालूम भी होगा, शायद ना मालूम हो। आप लोगों ने पायलट्स की यूनिफॉर्म देखी है? देखी है? हाथ उठाओ। हाँ, उसके ऊपर स्ट्राइप्स देखी है यहाँ पे काली कलर की। हाँ, तो दोज आर द स्ट्राइप्स, एंड वो आपकी बढ़ती जाती है जैसे आप उपाधि में बढ़ते हैं। तो मैं इनसे ये पूछना चाहूंगी, क्या स्ट्राइप्स केवल पायलट्स पहनते हैं? और क्योंकि फ्लाइंग थोड़ा एक अगर आप चाहें तो थोड़ा महंगा है फ्लाइंग की ट्रेनिंग, तो स्ट्राइप्स और किस किस तरह से मिल सकती हैं? और क्या हम स्ट्राइप्स टू साड़ीज में भी आ सकते हैं विद इन द एयरलाइन? क्या एवेन्यूज है एविएशन के फॉर पेरेंट्स हु आर सिटिंग हियर एंड फॉर चिल्ड्रन हु वुड लाइक टू जॉइन द एविएशन? सो बच्चों, एविएशन में आजकल बहुत कुछ अवेलेबल है, बहुत कुछ बन सकते हैं। हमारे गोल्डन स्ट्राइप्स यहाँ पे
वो जैसे मीनाक्षी जी ने बताया, जिस तरह से हम अपने को इम्प्रूव करते हैं, पहले 1.5 से चालू करते हैं जब हम ट्रेनी पायलट होते हैं, जब हम रिलीज होते हैं फर्स्ट ऑफिसर वो 2 स्ट्राइप बनते हैं, फिर हम कुछ एग्जाम्स देते हैं और कैप्टन का ग्रेड लेते हैं, तब हमारे 3 होते हैं, और जब हम कमांड में जाते हैं तो 4 स्ट्राइप्स होते हैं. अ 4 स्ट्राइप पर्सन इज अ कमांडर ऑफ दैट एयरक्राफ्ट, एंड उसको हासिल करने के लिए इट इज़ लाइक अ बिग डिग्री. हमारी डिग्रियां हमारे लाइसेंस के रूप में हैं, लाइसेंस भी उस तरह ही बढ़ता है, और हर स्ट्राइप के लिए हमको उतने ही एग्जाम्स, उतने ही एयरक्राफ्ट ट्रेनिंग, उतनी ही सिमुलेटर ट्रेनिंग करनी पड़ती है. यस, फ्लाइंग एक एक्सपेंसिव प्रोफेशन है, इसमें फ्लाइंग के लिए बहुत खर्चा उठता है. कई जगह स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं. आजकल कई संस्था हैं, हमारी इंडियन विमेन पायलट एसोसिएशन है, इंटरनेशनल विमेन पायलट एसोसिएशन है, मैं उसमें बहुत काम करती हूँ, और वो स्कॉलरशिप देती हैं डिज़र्विंग गर्ल्स को जो पायलट बनना चाहती हैं. इसके अलावा कई फ्लाइंग स्कूल हैं जो 50% स्कॉलरशिप देती हैं, स्टेट हैं जो 50% स्कॉलरशिप देती हैं फ्लाइंग के लिए. तो कई बच्चे करते हैं और कर सकते हैं. इसके अलावा हाँ, अगर आप पायलट नहीं बन सकते, और पायलट बनने के लिए आपको मेडिकली फिट भी होना पड़ता है. आपका अगर मेडिकली आप ग्राउंड हो जाओ तो आप फ्लाइंग नहीं कर सकते. ये भी बहुत ज़रूरी है. ये बिगनिंग से, बिफोर यू स्टार्ट द फ्लाइंग स्कूल से आपका मेडिकल होता है, और टिल लास्ट डे ऑफ योर प्रोफेशन. अगर आप कल रिटायर हो रहे हो लेकिन आज आपका मेडिकल ड्यू है तो आपको मेडिकल के लिए जाना पड़ेगा, आप फ्लाइंग नहीं कर सकते वो दिन. सो इतना स्ट्रिक्ट है ये प्रोफेशन. उसके अलावा अगर आप पायलट नहीं बन सकते तो एक मैम यहाँ बैठी हैं, ये कैबिन क्रू हैं, इनकी विंग होती है आधी, हमारी होती है पूरी, लेकिन हम उसी जहाज में उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, उसी फोकस से काम करते हैं. हम कॉकपिट में, ये कैबिन में किस तरह की परिस्थितियां आ सकती हैं ये आपको ज़्यादा बता पाएंगी. सो वो भी कर सकते हैं. उधर साड़ी मोस्टली आउटफिट होती थी, लेकिन आजकल काफ़ी चेंज हो गई हैं. सो अगर स्ट्राइप नहीं तो साड़ी पहन के भी आप एविएशन में जा सकते हैं एयरक्राफ्ट के अंदर. उसके अलावा ग्राउंड की बहुत ड्यूटीज़ हैं जिसमें भी आप you could be wearing the uniform as a sari and work with the airlines. So these are different way you can get in. Manisha, I would like to ask one thing which just struck me. The first lady, we started flying at 30s, and now is the millennium. So what changes have you seen or you felt, like for women especially, okay, they've come, or what struggles still we are fighting for? So could you give answer to that? कि 30 से लेके अब तक 2022 आ गया, तो क्या चेंजेस आए हैं और क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनसे? Yes, जब ये स्टोरी स्टार्ट हुई है फ्रॉम 30s to 50s, no women was allowed to fly commercial airlines. Finally 66 से मैं लूँगी कहानी आगे जो changes आए हैं. What changes main I would say that number of women getting into this profession, जितनी लड़कियां अब ज़्यादा अंदर आ रही हैं, और एक्सेप्टेंस. हमारे टाइम में एक लड़की को सिलेक्ट करते थे, हमारे बैच में 23 बॉयज़ थे एंड एक लड़की. 2 लड़कियों को भी नहीं लगाते थे क्योंकि वो सोचते थे पता नहीं एक कोप अप कर पाएंगी कि नहीं. आज वो सीन नहीं है. आज लास्ट बैच जो एयर इंडिया में गया है उसमें 16 गर्ल्स एंड 12 बॉयज़ हैं. सो हमने सीन चेंज किया कि आज उतनी ही लड़कियां अंदर आ रही हैं और लड़कियों को इस प्रोफेशन के बारे में जानकारी मिल रही है. बाहर एडवर्टाइजमेंट हो रहा है. हर मार्च 8 इंटरनेशनल वुमेन्स डे में सब न्यूज़पेपर कैरी करते हैं ऑल वुमेन फ्लाइट, इसलिए कि लड़कियां देखें और समझें कि बहुत लड़कियां हैं और ये फ्लाइंग प्रोफेशन ले सकती हैं. ये मेजर चेंज आया है. दूसरी बात, अंदर एयरलाइंस के अंदर भी हम जब ज्वाइन किए थे, हमारे जो सीनियर इंस्ट्रक्टर्स थे वो बहुत फ्रेंडली नहीं थे. वो हमें बहुत कुछ नहीं सिखाते थे जितना हमारे मेल कुलीग को सिखाते थे. उसके अलावा हैंडलिंग मशीन को देना, बड़ा लड़ना पड़ता था हम लोगों को कि हम भी वही हैं, वही कर रहे हैं, हम भी वही इमरजेंसी हैंडल कर रहे हैं.
कॉकपिट यूज्ड टू बी वेरी स्टिफ. हम एक लड़की और एक लड़का अगर कमांडर हमारा मेल स्टिफ होता था, हम लोगों को जरा सी गलती में दोबारा ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता था, जबकि एक मेल पायलट काफ़ी कुछ सीखते हुए निकल जाते थे. पर हम लोगों ने उसको कभी नेगेटिव नहीं समझा. बच्चों, हम ट्रेनिंग के लिए जब दोबारा भेजे जाते थे तो हम खुश होते थे, इसलिए कि हम सोचते थे हमें और कुछ नया सीखने को मिल रहा है. इसीलिए एक्सेप्टेंस इंक्रीज हुआ एंड गर्ल्स प्रूव्ड मोर देन 100%. ये बहुत था. हम लोग अगर थोड़ा सा एवरेज रहें तो हमको कभी अबव स्टैंडर्ड नहीं देते थे, लेकिन एवरेज से हमने 100% प्रूव किया. Even till today, I'm not trying to boast. Even when I had an accident, even Justice Mohta, जो जज थे जिनने ये कोर्ट फाइंडिंग किया था, he said is the first cockpit voice recorder where every checklist has been performed diligently till the last dot. And the flight data recorder also gave the data where everything was performed 100%. सो गर्ल्स थोड़ी सी ज़्यादा अपने आप को डिसिप्लिन रखी हैं इन प्रोफेशन में. हम कभी फॉर ग्रांटेड लेके इस जहाज में नहीं बैठते थे. कॉकपिट में हम जल्दी जाके अपना काम डबल करते थे, क्योंकि हम चाहते थे हमारे जो मेल कोलीग्स हैं वो ये समझे कि वी आर नॉट हियर टू जस्ट टाइम पास, और वी आर नॉट हियर टू नॉट परफॉर्म. सो स्लोली दैट एक्सेप्टेंस हैज़ कम. टुडे वी आर लाइक कोलीग्स. We stand together and discuss all emergencies. पहले लड़के हमारे साथ नहीं डिस्कस करते थे, लेकिन अब खड़े होते हैं, वो हमसे पूछते हैं, अच्छा how did you handle this? What did you do when you encountered that severe weather? How did you come out of it? How was the aircraft performance? You had hydraulic failure. What did you do? How did you land? Did the machine work well? So we discuss like one-to-one today. That is the major change I see. One last question. Can I ask that? Yeah, sure. You can go ahead with one question, and after that we'll be opening the round for the audience. यहाँ जो ऑडियंस हैं शायद वो नहीं जानते हैं कि मनीषा मैम ने अपना जो करियर है, जो सीखने की प्रक्रिया है, वो भोपाल से शुरू की थी. तो मैं उनसे यही जानना चाहूँगी अपने उस समय के भोपाल और अभी के भोपाल के बारे में, अपने स्कूल के बारे में भी. हाँ बच्चों, मैं भी इस छोटे से शहर की हूँ. मेरी पूरी परवरिश यहाँ हुई. मैंने सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल जो ईदगाह हिल में, वहाँ से पढ़ाई की. मैं पूरी भोपाल की हूँ. आज भी मेरा दिल भोपाल का है. ये हिंदुस्तान का दिल है मध्य प्रदेश, और मेरा दिल यही है. सो यहाँ से फ्लाइंग स्टार्ट की भोपाल फ्लाइंग क्लब बैरागढ़ में जो है, और फिर आई डिडंट लुक बैक. लेकिन मुझे बाहर जाना पड़ा बिकॉज यहाँ पे हम लोगों को फ्लाइंग बीइंग अ गर्ल बहुत कम मिलती थी. तो मैं चेंज जो बताऊंगी, भोपाल आज मैं बहुत साल बाद आई हूँ. मोर देन 30-40 ईयर्स बैक आई केम. आई वॉज इन्वाइटेड टू माई स्कूल. स्कूल की प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया. वहाँ जाके मैंने बच्चों को एड्रेस किया, और बहुत खुशी मिली अपने स्कूल में. और आप मानोगे नहीं, मैं 2 टीचर्स से मिली जो उस समय थी टीचर्स, and I was so happy to see them as much they were happy to see me. So my foundation was from here, my foundation from my school, and I really thank I reached the skies because I had a good foundation. So बच्चों, छोटे शहर से जाने वाले आसमान जरूर छूते हैं, ये मैं आपको बता दूं. बड़े शहरों में बच्चे गुम जाते हैं, फोकस नहीं रखते. सो आप बिल्कुल आगे बढ़ो. लेकिन भोपाल बहुत बदल गया है. ब्यूटीफुल है, बहुत ब्यूटीफुल भी हो गया है. कई चीज़ें बहुत बढ़ गई हैं. इतने घर बढ़ गए, इतनी रोडें, ये सब मैंने नहीं देखा था, लेकिन अभी भी सुंदर है. आई कैन अश्योर यू. Thank you so much, dear ladies. One second. We always say कि किसी की भी सक्सेस होती है तो उसके पीछे इस औरत का हाथ है. तो इनकी सक्सेस के पीछे इनके पति का हाथ है, इनके हस्बैंड का. एंड आई एम श्योर दैट सपोर्ट इज राइट हियर. मे वी रिक्वेस्ट हिम टू प्लीज come and stand behind her as a rock that he has always been.
And We यहाँ जो acknowledge you with gratitude. मीनाक्षी जी जो बोल रही हैं उसको मैं सच बताती हूँ इसलिए क्योंकि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तब मेरी इनसे शादी होने वाली थी, लेकिन एक्सीडेंट के कारण मेरा माइंड सेट नहीं था, तो मैंने मना कर दिया. मैंने कहा आई एम सॉरी, आई एम नॉट इन अ गुड फ्रेम एंड यू डिसाइड वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू. बट ही वेटेड. नॉट ओनली दैट, मेरी मदर मुझे वापस नहीं जाना चाहती थी कि मैं कॉकपिट वापस जाऊं, बट ही सपोर्टेड मी and he assured my mother she'll be safe, and he told me you go back what you enjoy, and I went back and joined Indian Airlines. So I owe this to him. जैसे मीनाक्षी जी ने कहा कि this was like Manisha was a rock, तो मैंने तो कुछ भी नहीं किया. I just stood behind the rock and saved myself from everything. Sir, I would request you to stay because I would want Avilash ji, founding member of the Society for Culture and Environment, to please felicitate him with a memento as a symbol of our respect and gratitude. Every successful man stands a woman. This is just upside down here. Sir, you can say I'm behind him, giving him success. This is what I'm saying. Behind every successful pilot, there is a man also, who is traveler and co-traveler. Thank you so much, dear ladies and gentlemen. And इससे पहले हम आगे बढ़ें, बीइंग एन एंकर, मैं लिबर्टी लेना चाहूँगा कैप्टन से एक सवाल पूछने के लिए. आई एम वेरी क्यूरियस टू नो, कैप्टन यू मेंशन्ड अबाउट द ब्लैक बॉक्स. सो मेरा सवाल ये है कि ब्लैक बॉक्स प्लेन में कहाँ सिचुएटेड होता है, एंड हाउ इज इट पॉसिबल कि प्लेन अगर तबाह भी हो जाए तभी वो ब्लैक बॉक्स बच जाता है एंड सिक्योर्ड रहता है. सो व्हाट इज इट अबाउट? Yeah. So black box is situated at the tail, back, this thing, and normal circumstances, the back of the aircraft is safer in all accidents. The front has more impact. That is why you find most of the cockpit crew never come out. We were lucky we had during takeoff, even though the black box is at the tail, the impact, the black box are made and created for getting all the flying data of that particular flight. It is fireproof, it is shockproof. You could land in -2G factor, it is shockproof, and it can be underwater for more than 3 months, nothing goes wrong with it. So आपको याद होगा एक एयर फ्रांस की फ्लाइट आफ्टर टेक ऑफ फ्रॉम न्यूयॉर्क went into the sea there in Atlantic, and the black box was retrieved after 2 months. So black box is made in such a way, and like I told you, it is bright orange in color so that it can be located during an accident. Even in fire, that black box is orange, so it strikes and comes out even under water or any shock. So it is where the analyze can be done what was the flight data at the time of the accident and what caused it. So this is how black box is safe, where all data is available. Thank you so much, Captain. And now it is more advanced with modernization. Pehले it was flight data recorder, FDR. Now it is DFDR, digital flight data recorder. So it has become more advanced today. Okay, certainly. Anyone from the audience, अगर आपके कोई सवाल हैं, आप हाथ खड़ा कर सकते हैं. Hello, ma'am. Ma'am. Please stand up. Yeah. Ma'am, I'm Shikha Yadav, a media student from Jagran Lake City University. So, as we know that being in this field is quite prestigious. So, is there any story in your book which can inspire those women who come from poor financial backgrounds and have less opportunities in comparison to others? There is a story of Captain Sunita Narula. She was the first woman in the world who flew the flight from Delhi to San Francisco in 2017 on 777, the longest flight in the world. You know, Sunita comes from Karnal, a very small background. She is from a government school where she did her education. She could not speak English when she got into flying. And, but she kept herself on, and when you read her story, she used to be a national yoga champion of the country.
When she was 9 years old, she was doing yoga and she was all over the news and paper. So her story title is From Yoga Mat to the Cockpit. When I met, Sunita is junior to me in the airline, she flies 777. And when I contacted her that I want to put you part of the book, her story is inspiring because being Hindi medium through and through, and this profession needs English. She started learning English after she got into flying, so she had finished graduation. And yet she didn't give up. She cleared all exams, she was perfect in her flying. So read her story. And she did get scholarship. Haryana government gave her scholarship, and when she joined Indira Gandhi Raj to Run Academy for her further flying, she was aided there also by Haryana government because she was a good performer and because the government understood that she can be what she wants to be. So with all that, when you are dedicated and determined, doors खुल जाते हैं बच्चों, बिल्कुल खुल जाते हैं और कहीं ना कहीं से आपको scholarship मिल जाती है. Let us move on to the next question. Next question, please. Yeah, I'm Asma Rizwan. Manisha, do you think women are psychologically stronger? Because 2 years back there was this accident in the Alps where later it was revealed that a pilot had psychological issues. So do you undergo such kind of test, and do you think women perform better there? Yes, we do undergo psychological test. We have to go through many of the, things like that. I feel two things. Women are much calmer in the cockpit than men. This is with my experience. I cannot talk for all male and I cannot talk for all women. But during my long span of 30 years, I have found on many incidents during my cockpit experience that my captain or the co-pilot do react in a manner which they could actually be calmer, they would react better. I have noticed that. One is that, and I feel women by nature can handle multiple emergencies because by nature women, it's probably inbuilt with us, or we've seen it happening at home with our mothers, juggling and, managing husbands and children and house and everything. So by nature we multitask ourselves, and by nature we handle quite well if put together multiple things. And this profession you need to be very calm because then your action is correct and your alertness is there. So I do feel yes, there are times, and another thing which I felt, most of these commanders would be in too much of a hurry. Get born, yeah. Women will go by yes, no, let him come, let the last this thing come and all. Hold close or I ask for startup. No, I would say no, let it close. It'll take 10 seconds more. But this is how I feel women are a little bit more calmer, and so they perform. We'll move towards one last question from Qureshi Sahab. मेरा नाम एसवाई कुरैशी है. मेरे अगली पैनल मेरी है. मैं अपनी पैनल के टाइम में इंट्रूड कर रहा हूँ. आपने बताया कि आपके कल के एक्सीडेंट वाले उसमें मैं भी फ्लाइट में था. बाकी आपका लेक्चर तो थियरी है. कल का तो बताइए. आपने कहा यू नो एवरीथिंग दैट हैपेंड. प्लीज शेयर विद अस व्हाट हैपेंड. सर, आप बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं and everybody knows you. I would just say it in one line. Like I told ma'am, the guy sitting there inside, he knows the situation, he knows what is the corrective action. Sitting behind, I can analyze 5 things. And as a pilot, I could analyze even more. Maybe I'm more experienced than him, obviously, because I must have been flying much more than he has put in experience. But, what really happened is the correct version should be given by him. But what I can analyze is there could have been some wind change during his touchdown, since it was an Airbus 321. It's a little bigger aircraft. The braking to stop the runway till the end of the runway, if he's had a tailwind in the last 50 feet from ground, he's pushed ahead
And so if he's eaten even 50 feet of ground there, breaking till the end of the runway would have been a marathon job. And it is always better. Our instructors, when they release us at command, go around is safer than trying to stop. You know what happened in Calicut? If he had gone around, he would have been safer. So in professional capability, I say going around is 100% safer than trying to put all auto brake and manual brake together. And there are aircraft which have skidded off the runway even on a dry runway when they have tried doing that. There was an incident in Delhi for a very senior captain, I don't want to quote now, and Delhi runway is much more in length, longer than Bhopal runway. And he went into the Kacha, he went outside the runway. By eating that runway, even a 10 knots of tailwind can push you ahead by 50 to 100 feet. Eating that runway gone is gone forever. So for us, it's go round. Maybe he could have taken off at that 50 feet, not given that impact of the wheel, where people got very, very nervous. So we don't know whether the tailwind made him push the wheel down or the wheel hit itself while going around. Because 100 feet to ground and 100 feet up is a very, very tricky situation. There are 100 safety issues at that time. And that time, the guys sitting inside in the controls have to be with the aircraft and ahead of the machine. Only then you can perform a correct action. And I think he did a marvelous job because he got airborne correctly. I heard the wheel go up, I heard the flaps go up, then it is all safe. You have no drag. And then the approach itself takes 10 minutes to come back. You can't just turn around and come. It's a full length approach. You have to climb a certain height. You have to turn. You have to bring your flaps down. So you need that height. You need the speed to come down. You will bring 1, 2, 3 flaps. Then you bring the gear down. And then only you can. So it takes a full 10 minutes to come back whenever you do a go round. So that is what. सही में थोड़ा वक्त कम है तो बस सही में एक आखिरी सवाल लेंगे चलिए, थैंक यू रघुराज जी से। मैं पूछ रहा था कि फिजिकल फिटनेस जब होती है आइज और बॉडी और सबका, कॉन्फिडेंस लेवल टेस्ट नहीं होता है, जबकि सबसे ज्यादा जरूरी वही होता है, क्योंकि 5 ईयर 10 ईयर्स के बाद कोई एक्सीडेंट की पोजीशन आती है और वो कॉन्फिडेंस लेवल अगर लूज हो गया तो डेफिनेट एक्सीडेंट। तो कॉन्फिडेंस लेवल के लिए क्या होता है? सर, कॉन्फिडेंट लेवल तो हमेशा होता है। कॉन्फिडेंट लेवल मेडिकल फिटनेस से नहीं पता लगता। कॉन्फिडेंस लेवल के लिए हमारे जो इंस्ट्रक्टर हैं, जो हमको ट्रेनिंग देते हैं और रिलीज करते हैं, इफ़ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट दे पुल यू डाउन इन 1 second, you don't know. If my CVR also have an indication that somewhere I'm thinking whether this action was correct or not, I will be asked to go for a recurrent training. So like I said today, 100% monitoring. I was in the last few years, I took a voluntary retirement. I was in the flight safety, 100% monitoring. If my captain's speed went even 2 knots more below 10,000 feet, we would call them unless they inform us voluntarily why that happened. There are many times Dubai ATC would ask you speed, continue with high speed ATC requirement. We used to press a button which is an event button so that when my CVR and FDR is open, they will know that I am informing myself I did that because of ATC requirement. So confident level is there and confident level is not through medical. We go through training, our instructors grill us, and if our performance is even, this is a profession where 70% is passing. If I get 69, I have to reappear for every test, whether it's simulator or ground or what. So it is a very, very, my last chapter is only this, behind the cockpit door. It seems like, seems like casual, picking up a bag, heading to the hotel to just sleep, because we just want to rest peacefully before our flight. And that is where I disagree that the confidence level test, it happens on every flight. Thank you so much, dear ladies, and thank you so much for such an interesting session. I would like to call upon Abhilash Khandekarji to felicitate the authors and the discussants with a memento as a symbol of the love and respect
on behalf of the Bhopal Literature and Art Festival. The memento is the mascot of the Bhopal Literature and Art Festival. It's a tribal painting made by Padma Shri Bhuri Bhai ji. A beautiful painting right there. जी हाँ, तालियां होनी चाहिए. For Captain Manisha Mohan ji. And we have mugs for our discussants. Smitha Singh Ji, Nidhi Chaphekar and Meenakshi ji. जी तालियां बरकरार रहनी चाहिए everyone. A thrilling session. बहुत सारी बातें हमें पता चली जो शायद पहले नहीं पता थी. And sir, Qureshi साहब आपसे समय 1 मिनट छीनते हुए, because there are so many children here, I can't stop myself. Flying जब लेते हैं आपको flight data चाहिए होती है, आपको वो it doesn't matter, I think I speak loud enough. Ask me tell you. आपको फ्लाइट डेटा मतलब वेदर कैसा है, फ्लाइट का प्लान कैसा है, तो वो ऑपरेशंस डिपार्टमेंट होता है. फिर एयरक्राफ्ट्स को सर्टिफाई किया जाता है. तो इंजीनियरिंग में बहुत स्कोप है लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए, सबके लिए. आई एम स्पेशली टॉकिंग अबाउट गर्ल्स बिकॉज लॉट ऑफ यू आर हियर एंड आई डोंट वांट टू मिस दिस अपॉर्चुनिटी. तो ये ऑपरेशनल साइड आ गई. डॉक्टर्स होते हैं जो डॉक्टर्स इन लोगों के सबके टेस्ट लेते हैं. कमर्शियल एरिया में चेक इन है, टिकटिंग है, मार्केटिंग है. मतलब you can be in the operational side, non-operational side, you could be anywhere, you could be heading the region, you could be heading a department. Hamari director flight safety, Harpreet, was also a lady. So there is so much that you can do, but if you want to do, अगर आप एक ordinary life जीना चाहते हैं तो हम सारे के सारे जी रहे हैं. लेकिन अगर आप उससे हट के कुछ करना चाहते हैं तो आपको फिर हट के कुछ करना ही पड़ेगा. You have to be extraordinary, unstoppable. Only then you can achieve it like she has. So all the best to all of you. Thank you so much, dear ladies.